I think AI transcript will also help. Do you want to turn that on? The AI transcript. Yes. Okay, I can start that one as well. Thank you. Okay, so let's jump into how we have to read the chart, right? And the basic nitty-gritties of what the chart is made of. तो हम थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने दो तीन चीजें बना के रखी हैं आपके लिए, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो इसके लिए। एनी टूल यू गाइस कैन go for. There are multiple tools available to read the chart. TradingView is one of the best. Uh, and you can also, so basically, if you are like really beginner, but you have, experience in the investing, so you all must have a demat account, right? And you must be checking all your investments through an app. That app also can provide you the chart analysis of that trade. And all we are doing is this um, um, candlestick patterns, right? So we have a lot of charts, but we have to just focus on the candlestick charts. All we are going to learn about the candles and how we deal with them, right? So what is a candle, right? When we talk about charts, what is a candle, right? So candle is um accumulation of the price action. Let's put it this way. What is price action? The price action is when you see price is moving up, going down, staying still, you know, only three actions can happen in the market. Either the price can go up, or it can go down, or it can stand still when there is no trading going on for that particular stock, right? Only three actions can go. And the candle is the accumulation of all these three things, right? And बनती कैसे है ये कैंडल? लाइक इफ यू सी, जो मैंने अभी चार्ट ओपन करके रखा हुआ था, समवेयर यू विल सी दिस काइंड ऑफ अ कैंडल, समवेयर यू विल सी दिस, ऊपर से थोड़ा कुछ निकला हुआ है, नीचे से थोड़ा सा कुछ निकला हुआ है, एंड देन देयर इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ इट, राइट? क्या है ये, मतलब व्हाट इज दिस बेसिकली, राइट? सो दिस इज द सॉलिड पार्ट दैट यू सी, राइट? वी कॉल इट एज बॉडी, right? And the line that you see on the top and the bottom, right? It's called wick. A candle is a combination of body and wick. Now, what is body and what is wick, right? So, body is the total volume, total price action, basically the net price action that a candle had moved. So let's say if it is, so there are only two types of candles you will see on the charts. One is going to be green candle, and one other one is going to be a red candle, right? So either this or this. Only two things you can see. Now the size of it, forget about that right now, right? But only two things you can see. Now the body part is what I'm referring to is this part from here to here. Okay.
When it is a green candle, that means we also call it as buying candle, or in other words, we can say it is where the buying is happening. Okay. When it's a red candle, it's also called as sell candle, or in other words, where we are selling or sellers are selling. So there are two types of people in the market, buyer and seller. And the chart is made of buying candles and selling candles. How that candle is made shows you the price action, the price movement. If the buyers are heavy, they will make sure they will create a buying candle. If the sellers are heavy in the market, they will make sure that they will create a red candle. And the solid part of the candle is always called as body. And the top part and the lower part, the lines that you see, is called as wick. If it is if it is a green candle, the lower part of it is, sorry, the lower part of where the body is starting from, right? This is your opening price, this candle. Whenever you will see the green candle, the lower body part, where you see the solid body part, it will be called as opening price. And the top part will be called as closing price. Similarly, on the red candle, it's just the other way around. The top part, the top part is called as opening price. And the low body part is called as closing price. Okay. Now, what is wick? So we know now what is the solid part, right? It is the price movement. But wick is also a price movement. But why the wick is being created? Why it's not like a complete solid, right? You may ask that question. So why the wicks are created? So for that, you have to understand what is happening, right? What is happening in the market? In the market, somebody is buying and somebody is selling. I can only buy something if there are enough sellers. We are not generating stocks here. So any company who is listed in the stock market has limited number of shares to play around with. Now, when we say limited, the limit can be very high, right? Usually it is very high. But if somebody is selling, like let's say मेरी कोई कंपनी मैंने रजिस्टर करी and I have 100 shares right now to play with. अब इस ग्रुप में अभी जितने भी 6 लोग हैं, सब लोगों ने उसके चार चार पांच पांच स्टॉक्स, छह छह दस स्टॉक्स ले लिए, and then everybody is holding on to it. Now, if somebody else joins, the new person joins in this group and says, I want to buy that particular stock, but जो 6 लोग जो होल्ड करके बैठे हैं उसमें वो 100 की क्वांटिटी इज फिनिश्ड, तो सातवें बंदे को मिलेगी कहाँ से? क्योंकि हैं तो टोटल स्टॉक्स 100 ही, इक्विटी स्टॉक्स 100 ही हैं, तो सातवें बंदे को मिलेगा कहाँ से? किसी को तो बेचना पड़ेगा ना,
तभी तो वो सातवां बंदा, द सेवेंथ गाय, विल होल्ड ऑन टू दैट इक्विटी और होल्ड ऑन टू दैट स्टॉक. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट. Somebody is selling, the other person is buying, right? He's buying the quantities which one seller has sold out, right? And that buying and selling is making these candles. Okay. But imagine मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं, राइट? और मेरे 100 के 100 बिक गए. मैं सारे के सारे, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, आप 6 लोगों ने मिलकर वो 100 के 100 स्टॉक कंप्लीटली बाय कर लिए. तो मार्केट में जो कैंडल बनेगी ना, वो, व्हाट डू यू थिंक क्या बनेगी? एक ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि बाइंग हुई है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, राइट? और वो बाइंग ने एक कैंडल बनाई, और वो कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके की, एक सॉलिड कैंडल, बिकॉज देर इज नो सेलिंग. बट अब उस कैंडल के अंदर से, उस 100 में से, मतलब 6-7 लोग जो होल्ड करके बैठे थे, उनमें से 4 लोगों ने डिसाइड किया, या 3 लोगों ने डिसाइड किया कि, यस अरुणिमा, गो हैड. मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। आपने बोला कि 100 लोगों ने, वो सॉरी, यहाँ पे बाइंग हुई है, दैट्स व्हाई द कैंडल इज ग्रेइंग। बट किसी ने राइट. बेचा है इसलिए बाइंग हुई है, राइट? सो सो मैंने मेरी कंपनी अभी लिस्ट करी है, राइट? एंड आई कम अप विद 100 शेयर्स इन द मार्केट, राइट? मैं ओनर हूँ कंपनी का. आई हैव लिस्टेड माई कंपनी इन द स्टॉक मार्केट. ओके. एंड आई हैव ओनली 100 शेयर्स टू प्ले अराउंड विद. एंड जैसे ही मैंने लिस्ट किया, यू 6 guys have bought all that 100 shares, right? ओके, मेक सेंस। ओके। Right. सो मार्केट में क्या हुआ? बाइंग हुई. मार्केट में वो आप 6 लोगों ने सारे के सारे स्टॉक्स बाय कर लिए, राइट? ओके, गॉट जब वो बाय हुआ, तो लेट्स से कि मेरा ओपनिंग प्राइस यहाँ पर जो था, वो मेरा 30 रुपीज का था. ओपनिंग प्राइस आई लिस्टेड एट एज 30. बट एज एंड व्हेन यू गाइज वर बाइंग, माय मार्केट प्राइस वेंट अप 100 रुपीज. और वहां पे टाइम खत्म हो गया उस दिन का, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आवर्स ही हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए. जो भी हमारा 9 AM टू 3 PM, 3:30 PM of Indian market, for every market. This is not, by the way, this session is not just for the Indian market. This is in general, in every market you go, it's the same concept. You can apply the same concepts everywhere. Okay. So I listed my stock at 30. The price opened at 30. But as and when you guys started buying, it went up to 100. Now I am at 100 rupees of per stock, right? So कुछ सेलिंग हुई नहीं इसके अंदर. नाउ द नेक्स्ट डे व्हेन द मार्केट ओपनड अप, क्या हुआ कि 3 लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ वी विल सेल इट ऑफ, राइट? तो फॉर योर दिस थिंग, राइट, वी विल सेल इट ऑफ. ओके. तो जब नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन हुआ, उससे प्रीवियस डे पे मेरा प्राइस क्या था इधर? 100 रुपीज. सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने, क्योंकि ओपनिंग प्राइस एवरी डे यहीं से चालू हो गया. मेरा ये 100 रुपीज का था.
ठीक है। ठीक है। और ओपनिंग प्राइस मेरा 100 रुपीज का था। अब तीन लोगों ने उसमें से डिसाइड किया कि वी विल सेल इट ऑफ। हमारे जो भी स्टॉक होल्डिंग्स हैं, उन तीन के पास टोटल मिला के कुछ 30-40 शेयर्स थे। तो जब उन्होंने बेचा 30-40 शेयर्स, जब उन्होंने बेचे, राइट, तो मार्केट के अंदर जब सेल ऑफ हुआ, तो जब वहां पर कुछ सेलिंग आई, जो प्राइस मेरी 100 रुपीज से चालू हुई थी, वो मैंने बेचना चालू किया। तो मतलब अगर जब तक उसको कोई खरीदेगा नहीं मार्केट के अंदर, तब तक वो प्राइस डाउन जाएगा, क्योंकि मैंने अब बेचना चालू किया है। तो मेरी कैंडल पूरी यहां तक गई पहले, नीचे गई पूरी, जब मेरा चालू हुआ 100 रुपीज पे। और स्टार्ट में ही मैंने मॉर्निंग के अंदर ही बोला कि आई एम गोइंग टू सेल माई स्टॉक। तो मार्केट ने प्राइस को नीचे पुश किया। जब नीचे पुश किया तो प्राइस मेरी आ गई, लेट्स से 80 पर। ये मेरा 80 का मार्क है। बट जब मार्केट में वापस से वॉल्यूम आया, वॉल्यूम कैसे आया, क्योंकि तीन चार लोगों ने सोचा कि हम बेच देते हैं। जब मार्केट का मार्केट में वापस से वो वॉल्यूम आया, तो लोग जो पेंडिंग थे, जो सोच रहे थे कि हमको खरीदना है, जो यहाँ बैठे थे यहाँ पर प्राइस एक्शन लगा के, उन लोगों ने वापस खरीद लिया। जब उन लोगों ने वापस खरीदा, तो प्राइस वापस से ऊपर की तरफ चला गया। और अब मेरा प्राइस जो है वो 120 पे जाके क्लोज हो गया, क्योंकि अब प्राइस और बढ़ गया उस स्टॉक का। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ ना, इसकी वजह से विक क्रिएट होते हैं। एनी टाइम व्हेन there is a fight between buyer and a seller, you will see an imbalance in the price. The imbalance is when buyers, there are sellers who wants to sell, who wants to drop the price of that market, of that trade, of that uh, stock. But then buyers wants to still buy it, and then wants to push the market upwards. Now, who is going to win is a different story. We will learn that in the next slide. But when there is a conflict of interest in the market, buyers wants to buy, sellers wants to sell. Who is dominating is a different story. But if the only trend in the market right now is only buying, you will see this kind of a candle. But if the trend is buying and selling both, right? Who is winning? Different story. Then you will see these kind of candles. The wicks are the imbalance in the price action. When there is buyer who wants to buy it, seller who wants to sell it, somebody is dominating the other. That's when you will see the imbalance, and that's when you will see this wicks getting created. We will see this in the real charts also, right? But for now, just keep this into your mind, that why the wicks are getting created when there is an imbalance. All right. So I will take a pause before I move. Let me know, because I can do it because it's a small audience. Let me know if this much is clear. And anybody has questions on this? Ankit, Anvesh, Khushbu, Nikhil. Will you explain in future how this week can impact our decision? Oh, absolutely, yes. Yes. Okay. So if no questions, then हम लोग next के ऊपर मूव करते हैं, right?
और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स की कैंडल होती हैं, राइट? और हम लोग कैसे देखेंगे चार्ट को। आफ्टर दिस वी विल गो ऑन दैट, राइट? सो जो मैंने आपको बताया कि देर आर ओनली थ्री थिंग्स कैन हैपन। द थ्री थिंग्स आर बाइंग, सेलिंग एंड नो एक्शन, right? No action is in when there is no trade happening on that one, right? So you will see these kind of candles getting created. Okay. The first candle that you see here is called green exciting candle. Why are we saying this as an exciting? And what does it portray to, right? Green defines buyer's heavy market when people are buying, right? Why it is exciting? Exciting means then that there is a lot of traction that had happened in this, or a lot of buying, or a lot of price change has happened. It's a big candle. Big green candle is what we called as green exciting candle. Okay. Means, again, I'm repeating, green defines the buyer's heavy market. And why exciting? Exciting means that there is a lot of price movement has happened. So ऐसा होगा कि प्राइस 100 से चालू हुआ है और वो 130 140 तक चला गया है, 120 तक चला गया है, मतलब द बॉडी पार्ट हैज बिकम बिग फॉर दैट कैंडल. द वॉल्यूम इन दैट one was heavy, and that's why the body part has become big, and that's what is exciting in the candle, right? Similarly, the other way around is red exciting candle. When red defines seller heavy market, the notion is people are selling. Why exciting? Because there is a huge or big price movement that had happened. So 100 पे चालू हुआ था मेरा कोई भी स्टॉक, आज गिर गिर के वो 60 पे बंद हुआ है या 80 पे बंद हुआ है या वट एवर, मतलब कुछ प्राइस हुआ है एक्शन उसके अंदर. ऐसा नहीं कि 100 पे चालू हुआ और 99 पे बंद हो गया, वैसा नहीं. बट 100 पे चालू हुआ है, 80 तक गया है, 70 तक गया है, 60 तक गया है, 90 तक गया है. एक अच्छा खासा मूवमेंट किया है प्राइस में, ट्रेवल. तो वो एक्साइटिंग है. दैट्स रेड एक्साइटिंग. द वॉल्यूम वॉज ह्यूज. बट देन देर आर दीज बेस कैंडल्स. नाउ बेस कैंडल्स कैन बी ग्रीन और बेस कैंडल्स कैन बी रेड, both of them, right? But the basic fundamental of the base candle, which is a very, very important candle in this chart, it defines where the fight is happening of buyer and seller. So why the base candles are formed in the chart? It's because the market is deciding which way to move, and it cannot. Let's say कि मेरे पास अभी मार्केट के अंदर बायर्स आए, उन्होंने बोला आई वांट टू बाय, and they started building up the volume, and they are taking the price from 100 to 105 to 110. And now all of a sudden sellers introduced themselves. They said, no, no, you're not going up, we are going to sell everything. And the price has started coming down and down and down again and again. From 105 it went to 95. And then buyers started buying again because they were dominating the market. So they said, we will buy more because we want to buy more. So they started doing that from 95 to 105, and the market closed. So the price movement that happened in this candle was from 100 to 110, back to 95, back to 105.
These are just examples, right? Just numbers. You throw any number, but you see how much the candle moved. The candle moved from 95 to 110, 15 rupees or $15 or 15 euros or whatever you want to call it, right? That day. But the actual price movement that happened, so it made its top and it made its bottom and it made its top, right? At 95 and 110, right? But actual movement where the price got closed or price got started was from 100 to 105. Because it moved from 100 to 105, it made a green base candle. But then there was no big movement, actual movement, because there was still fight was happening between buyers and sellers. And then the why the red candle is base candle gets formed is just the opposite. So one day I decided I will sell it off, right? So my price was at 100. Sold it off everything or whatever I wanted to sell it off. Sellers were heavy and they pushed this to 95, right? But then buyer became active and buyer said, no, no, we will buy more. And then they took the price all the way to 110. But then seller said, no, no, we will sell more because we want to win, we want to dominate. So they dominated again. They pushed the price back here at this end, and then the market got closed. And finally, it got closed at 95. So the actual price action that had happened was between 110 to 95, 85. But then price, current market price was it opened up at 100, it got closed at 95. Only 5 rupees, 5 euros, $5, the way you want to put it. So they were not able to decide yet which way the market is going to go, who is heavy, who is dominating. They were still fighting here. That's why the base candles gets created. I'll pause again and I'll ask questions if you have any. Anvesh, Khushbu, Nikhil, Arunima, Ankit, any questions? think it would be better if we can understand this by a live chat. I mean, or Yes, yes, we will go. quick We will chat. go on the chart. We will go on the chart after this. Yeah, I think Okay. So let's jump onto the charts now. And that's what we are here to learn, right? Now let's open up any stock here. Um, Anything, let's say Sun Pharma, right? Or I will delete all this. Second. Okay. So Sun Pharma, as we all know, it's a medical, Anvesh, you might be aware about this as well. Most of you guys are aware. It's a pharma sector stock, right? And it is one of the heavyweights of the pharma sector, the heavyweights of the stocks. Basically, when I say heavyweights, these are the stocks in one of the particular sectors which has more weightage, like big presence. Like in Tata, right? Tata has a big presence everywhere. Reliance has a big presence everywhere, right? So they are in the different sectors. That's how Sun Pharma, like Sun has a different presence, but in pharma it has a huge presence, right? So this is a heavyweight stock. Now, if you remember, I told you what is a candle, right?
And just give me a moment. Um, so what is a candle? I told you, and this is the live examples of the candles, right? So if you see this, there are only three candles that you see in this, right? This is a chart, candlestick chart, and three candles are base, where the body part. Okay. So before we go here, right, there's one more thing that I wanted to tell you. Now, what makes a base and exciting candle is what we understood by the price action. But there is one more rule to it, right? The rule is what you will consider as exciting, what you will consider as base, right? To understand that, there is a rule. The rule is if the body part of any candle is more than the wick part, or is more than 50% of the wick part, you will consider that as an exciting candle. I will repeat. If the body part of any candle is more than 50% of the total candle, then you will consider as exciting candle. If the body part of any candle is less than 50% of the total candle, you will consider this as base candle. Okay. Yeah, Tarun, So I these have are a the, question. yes. So, what makes the length of the wick, right? Somewhere Hmm. it is quite long and somewhere it is Yeah. short. So, Yes. how does it happen? Yes. That's what we are going to learn on the chart. Okay, okay. Okay. Why that happens. So I will answer that on the chart. That way you Yeah. will understand it more. Okay. So you understand these two rules, right? How to find out which one is exciting candle, how to I consider which get, one is exciting. Yes. Go ahead. yeah. So how to consider which one is exciting? Hmm. If the body part is less than the total candle, are you saying it means that No, the dispute at the start or at the end no, I mean, it's more, it has happened more than the actual trading, or what does that mean? no. So if you see this one, right, the first slide that I showed you, what is a candle? Yeah, I mean, that's where I'm trying to understand. So you said the Yeah, week happened because there was this dispute. dispute. Yes, yes. There was a fight that was happening, right? So Exactly. So there you're was an saying if it was less imbalance. than 50%, means the Hmm. fight happened more than the More than actual. that. Correct. Yeah. Correct. So that is what we are saying, right? So what we are saying here is in this one, what we are saying in this one is what decides that there will be an imbalance. The imbalance basically happens because there is a dispute between buyer and seller. Who is winning is different story. I told you, right? Who is winning is a different story. But what I'm telling you in this slide is what makes it as a green exciting, what makes it as a red exciting, what is a base candle, and how you will identify what you have to consider as exciting and base. So exciting candles definition is very simple. If the body part is more than the whole candles, more than 50% of the whole candle, you will consider this as green exciting candle. If the body part is less than 50% of the whole candle, then you will consider that as a base candle. Those are the two rules to identify what is exciting, what is base. Okay. Now let's go back to the chart where we were. And now any one of you can tell me uh, what candle you will consider this, which I have marked.
Anyone? By the definition of, Base, sorry, I think base, because base, right? So it can be considered as base. What is this candle? Base. Base again, right? What is this candle? green I exciting. think That's green exciting. Yeah. What is this candle? This red candle. red exciting. Red exciting, right? So that's how you will figure it out, right? What is your red exciting? What is your green exciting? What is your base? Now, even though there is a definition attached to it, right? But it also, even as and when you are going into this and you will study more, right? That's not a definitive definition, or you're not going to take the marker and then you see how much is the body part. Actually, you will see on the real time, or when you are learning the chart, right? That how much price has moved. It is all about the price movement, right? So, like in this case, hold on. Like in this case, if you see, right, this is what the price movement is. Now, what is the open price? As you were, we know for the red candle, the opening price is always on the bottom, right? This is the opening price. If you see, it is 1677. You will see on the left side of my screen, there is a number coming, right? 16778, right? And then the top is where the market got closed. The body part of top body part is 1685. You will also see when I will hover it, what is the high, what is the low, O for open, okay? O for opening. Opening means where this candle got started from, which price, right? Open. What is the high that it had made? What do you mean by high? High means until what range it has gone. That is this one, right? The whole candle's high, right? What is the low it has made? What is low? The lowest part of the candle, which is this part, right? And what is the closing? C for closing, 1678. So if you see, the body has moved only from opening to closing. From opening to closing is what we consider the body, right? So 1686 to 1678 is what we have seen, correct? You get me? Sorry. If we are here, right? So 1686 to 1678. So price has moved what? How much? Only 8 rupees, right? And the whole candle has moved how much? High and low. You see the high and low. 1693 to 1672. That means around 20 rupees. But the actual price volume was from 86 to 78. Only 8 rupees. But the price action has gone for 21 rupees or 20 rupees, right? So by looking at it, like Ankit, you said it's a base, right? You are right. Because by looking at it, you should understand how much the price has moved, right? Right. But the basic definition is the same, right? If you see the volume or the body part is less than 50%, you consider this as base. For now, you understand that. Okay. Yeah. Any questions on this? Right. So let me jump on to the real stuff now. Now, since you know how the candle, is made,
what the candle is made of. But you will now ask, this is okay. But now if I want to go ahead and make a trade, or if I want to understand this chart, right? What is what is happening? Why there are multiple red candles, exciting candles, then there is a base candle, then there are multiple green candles, and then there is, right? You may ask this, right? So for that, let's go back to this slide, the new slide. Okay. And more often than not, you will see these kind of patterns onto the chart. Okay. All right. So if you bring your notice to here, right, on this pattern, just look at this pattern. All right. What is happening here? So in because we now we have I have briefly touched upon how the price action is moving, right? So you will get the more clarity of what is happening here. So क्या हुआ यहाँ पर पहले? मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट ओपन हुआ नेगेटिव, मतलब सेलिंग इंटेंशन के साथ, राइट? क्योंकि एक रेड कैंडल मिली अपन को, करेक्ट? एक रेड कैंडल बनी, और ये रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी। उसके बाद एक बेस कैंडल देखने को मिली अपन की। नाउ कलर डजंट मैटर ऑफ द बेस कैंडल फॉर नाउ। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ बेस कैंडल। एक बेस कैंडल देखने को मिली, और फिर उसके बाद अपन को देखने को मिला एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो ये जो पिक्चर है, ये क्या बता रही है अपन को कि प्राइस एक्शन ने क्या किया है? ये बता रही है अपन को कि मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में सेलर्स बहुत एक्टिव थे। उन्होंने प्राइस को पूरा मूव किया नीचे की तरफ, क्योंकि वी नो नाउ कि रेड कैंडल का ओपनिंग जो है वो उसका बॉडी का टॉप होता है, राइट? प्राइस ओपन यहां पर हुई, राइट? और वो नीचे तक गई, यहां तक पुश किया उन्होंने, और फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ यहां पर। इसका इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर सेलर चाह रहे थे कि हम लोग प्राइस को पूरा नीचे तक मूव करें, तो यहां पर विक बनता ही नहीं। यहां पर विक क्यों बना? क्योंकि यहां पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। वो इम्बैलेंस कौन लाएगा? देर आर ओनली टू पीपल इन द मार्केट। इफ sellers were heavy, who will create the imbalance? Anybody can answer. Buyers. Buyers, right? So if sellers are heavy, and if we want to create an imbalance, only buyers can make the imbalance. तो buyers ने imbalance create किया यहाँ पर, और प्राइस को थोड़ा सा धक्का देके ऊपर की तरफ मार्केट बंद करवा दिया, या कैंडल बंद करवा दी। ओके। और फिर नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या हुआ उसका? यहां से हमको क्या देखने को मिला? इस विक से हमको क्या देखने को मिला, क्या समझ में आया? कि यहां से हमारे बायर्स एक्टिव हुए हैं। सेलर्स वर एक्टिव ऑल द वाइल, बट बायर्स फाइनली एक्टिव हुए, तो उन्होंने प्राइस को थोड़ा सा अपवर्ड पुश किया, और वहां पर मार्केट क्लोज हो गया। कंसीडर दिस। नेक्स्ट डे जब हम वापस आए, तो हमने देखा कि बायर्स काफी एक्टिव थे। कलर ऑफ दिस डजंट मैटर अगेन, राइट? फॉर नाउ लेट्स कंसीडर कि यहां पर फाइट चालू हो गई। बेस इज ऑलवेज वेयर द फाइट हैपेंस। ओके। जहां पर मार्केट नहीं डिसाइड कर पा रहा कि किस तरफ जाना है, तो यह इस बेस कैंडल पर बायर्स एंड सेलर्स की अच्छी खासी फाइट चल रही है। ओके। और मार्केट में कुछ प्राइस का मूवमेंट ज्यादा हो ही नहीं पाया, क्योंकि बायर्स अगर बाय कर रहे थे तो सेलर्स सेल कर रहे थे, और प्राइस
बहुत ही रेंज बाउंड होकर रह गई। मतलब रेंज बाउंड हम लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा मूवमेंट आया ही नहीं। 3 4 5 पॉइंट्स का, यूनिट यूरोस का, डॉलर्स का, रुपीस का, सिर्फ उतना ही मूवमेंट आया और वो मार्केट वहीं क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे वी सॉ, पहले बाय सेलर्स एक्टिव हुए काफी और उन्होंने प्राइस को नीचे धक्का दिया काफी, बट बायर्स फिर उसके जस्ट बाद वापस से एक्टिव हुए और वो कहां तक ले गए? प्राइस पूरा ऊपर रिकवर करके चले गए। हम लोग इसको इसी तरीके से रीड करेंगे। एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? राइट। बट जब ये हो रहा था, ये सब कुछ जो भी प्राइस एक्शन हुआ, आप देखोगे कि जो रेंज है ग्रीन और रेड रेड कैंडल की, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। राइट। ये सब कुछ हमारा हुआ, लेकिन ये हमारा सेम रेंज के अंदर ही हुआ, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन रेंज काफी बड़ी है। राइट। दैट्स व्हाई दे बोथ आर एक्साइटिंग कैंडल्स। लेकिन बेस पे फाइट भी हुई। ग्रीन हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर सेलर बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने वापस से प्राइस का मूवमेंट पकड़ दिया। तो क्वेश्चन कुड कम कि ये आप हमें क्यों बता रहे हो? इसका क्या मतलब पर्पस क्या है? ये फाइट्स तो ठीक है जो आप बता रहे हो, इसका पर्पस ये है कि व्हेन एंड इफ एट ऑल यू वांट टू टेक अ ट्रेड, you always have to find out on the chart these patterns. ये 3 कैंडल्स आपको ढूंढनी ही ढूंढनी है। What do we call these patterns? What do we call these candles? These are red exciting candles, these are green exciting candle, and these are base candle. But what it is basically, right? So if you are writing it down, just write it down. Take a note of this. When you see a pattern of this, right, it is called a zone. What is it called? A zone. If the third candle in the zone, that means this candle in the zone, is green, it is called a demand zone. It is called a demand zone. What is a demand zone? Demand zone is where buyers became active and now the market price is shooting up. That is what is called the demand zone. That means buyers heavy market. This is a demand zone. If you see the third candle in this is red, it is called a sell zone or selling zone. Or basically, this is for the people who wants to sell, always sell, 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 sell. So forget about that one, but it is a selling zone. That means this is where you will see where the price is going down, means the notion in the market is sell. That means it is a seller heavy market. Okay. So what is a demand zone? What is a selling zone? Is this one. And why I am telling you this is because why I'm telling you this is because you want to find this zone in on the chart before you take a trade. And in these zones only, you will take a trade. What makes a zone is a combination of 3 candles. And if you're writing it down, again, write it down.
The first candle of the zone is called leg in candle. Leg in candle. The second candle of the zone is called the base candle. The third candle, which is the last candle, is called the leg out candle. Now, first is leg in. Second is base. Third is leg out. This makes a zone. This is what we call zone. Okay. Now, what will make a zone a demand zone? The definition of that is when there are three candles. First is leg in, second is base, third is leg out. But leg out candle is green, exciting. This will make it as demand zone. Okay. And what is a sell zone? When there are three candles, first is leg in, second is base, third is leg out. But leg out candle is red, exciting. Exciting. That is a sell zone. Okay. Now let's go back to the chart. Any chart we will open. Let's open Nifty only, right? Any chart we will open. What we are looking for? A leg in, a base, a leg out. All right. The leg out has to be exciting. Leg in has to be exciting. Base is base. Let's find a demand zone. To find a demand zone, leg out candle has to be green. We don't care about base and leg in candle color, but leg out candle has to be green. Now, if I want to ask you, can we consider this as a demand zone? Anybody want to answer this? Yes. So what are we looking at here is a red candle, that's which is exciting candle because you see this, it's not called a base. So we can consider this as red candle. Two base candles, which are nothing but fighting where the fighting is happening. And then the green exciting candle, right? So we are looking for the green exciting candle. Before that, we are looking for the red exciting and base candle. This is a zone, right? So this is a demand zone, right? What do you think? What zone is this one? Anybody want to answer?
Selling zone. Selling zone. Selling zone or supply zone or sell zone, whatever you want to call it. Why? Because this is a green exciting candle, but which is a leg in candle. So we don't care about the color of this. We don't care about the color of the base candles. All we care about the leg out candle. Leg out is a red exciting candle, right? So this is a selling zone. This is what we are looking at right now. Yeah, let's figure out more. So can this be a demand zone? So first zone that we figured out, leg out candle, but this is considered as leg in for the next zone. So this is an exciting candle. These are base candles. And then there is one more exciting candle. Can we consider this as demand zone? Answer is yes. Because leg in, base, and leg out, right? So these are some examples of what we are looking for on the chart. All right. Now, why we are looking this? What is the purpose of finding a zone? Right. Let's quickly focus on that because we are running out of time anyway. Right. So idea is that whenever we plan a trade, right? Whenever we plan a trade, we want to plan a trade in the zone. For that, we have to figure out a zone. We have to find out a zone. Simple as that. Now, how we figure it out a zone is what we have seen, right? But what is the purpose? Why do we have to figure out a zone, right? What does it entail to? So, क्या होता है कि मैं यहाँ पर एक अभी एक ये जोन बना रहा हूँ, ठीक है ना? ये मेरा एक बेस कैंडल है। एक सेकेंड। ये मेरी एक बेस कैंडल है। ये मेरी एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन लेग इन, ये बेस और लेग आउट, राइट? तो मेरा एक ये डिमांड जोन है, राइट? तो मैंने ये डिमांड जोन को अभी जस्ट समझ लो इस चीज को कि मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया। ये डिमांड जोन को जो बेस कैंडल है ना उसको मैंने ऐसे मार्क कर लिया। उसका टॉप पार्ट मैंने मार्क कर लिया और मैंने उसका बॉटम पार्ट मार्क कर लिया, राइट? अब आप जब भी चार्ट देखोगे ना तो वो चार्ट में आप जब ये जोन फिगर आउट कर लोगे, आप जब भी देखोगे कि प्राइस हमेशा उस जोन से ही रिएक्ट होगी। अगर वो डिमांड जोन है तो वो डिमांड जोन में आएगी और वापस से ऊपर चली जाएगी। अगर वो सप्लाई जोन है या सेलिंग जोन है या सेल जोन है तो अगर उस जोन में आएगी तो वहां से वो डाउन चली जाएगी। दो ही एक्शंस करेगी वो, या तो वो जोन में आएगी और ऊपर चली जाएगी या फिर वो जोन में आएगी और वो नीचे चली जाएगी। अगर जोन में आके ऊपर जा रही है वो एक डिमांड जोन होगा। अगर जोन में जाके वो नीचे जा रही है वो एक सप्लाई जोन होगा। और वो सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स आप फिगर आउट करके मार्क करके रख लो या रख लोगे जब भी आप चार्ट रीड कर रहे हो तो। और आपको वो प्राइस एक्शन वैसा ही देखने को मिलेगा। और मैं उसको आपको बताने के लिए मैं आपको वापस से कोई एक चार्ट खोलता हूँ आपके लिए। लेट्स कंसीडर दिस सन फार्मा क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर थे तो उसी पर चलते हैं, ठीक है? अब ये सन फार्मा का मैंने एक मंथली चार्ट ओपन किया है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं तो हम लोगों इसको मंथली टाइम फ्रेम पर अभी देख रहे हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम पर है चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर है, अपन को तो जोन फिगर आउट करना है। तो मैं ये लेग इन, बेस बेस और ये लेग आउट इसको एक डिमांड जोन कंसीडर कर सकता हूँ। यस,
अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी बेस कैंडल्स की पूरी बॉडी और विक से विक तक को मैंने इसको मार्क कर लिया, क्योंकि फाइट हमेशा बेस पर ही होती है। तो मैंने बेस को मैंने ऐसे मार्क कर लिया। अब आप देखो क्या हुआ है, प्राइस एक्शन के अंदर क्या हुआ है। प्राइस यहां से पूरी की पूरी ऊपर तक गई, ऑल टाइम हाई बनाया, ये अपने टॉप तक गई। ऑल टाइम हाई से सेलिंग आ गई फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, किसी ने बोला होगा कि मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से। मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कभी भी आ सकती है, सो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और कितनी भी आ सकती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे जोन्स पर है। तो जब मार्केट से प्राइस से जब नीचे आई, ये यहां तक इसने एक टॉप बनाया था। जब मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, तो इसने एक ये प्राइस नीचे की तरफ पुश करी, फिर इसने और नीचे की तरफ पुश करी, और फिर यहाँ पर फाइट हुई बेस कैंडल्स पे, बायर एंड सेलर की, और फिर प्राइस वापस ऊपर चली गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद हुआ कि जब प्राइस वापस से अपने हाई पर गई, अपने आप टॉप पर चली गई, वापस से कोई तो जगह होगा, उसने बोला होगा कि यार मेरे को अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो उसने वापस से सेल करना चालू किया। अब वो सेल करा उसने, और लोगों ने देखा देखी और किया, फिर थोड़ा और फाइट हुआ, फिर और प्राइस नीचे आई, धीरे 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 करके प्राइस पूरा नीचे आई, और प्राइस नीचे आके कहाँ पर रुकी? हमारे डिमांड जोन में। डिमांड जोन में प्राइस आएगी, तो प्राइस वहां से ऊपर जाएगी। जैसे ही प्राइस नीचे आई, ग्रीन कैंडल बढ़िया एक मूव देती हुई आपको दिखी, और दिखी, और ऊपर तक गई। लेकिन अब ये नीचे क्यों आई? क्योंकि अगर आप यहां देखोगे, तो यहां पर एक सप्लाई जोन है। ये दिख रहा है आपको? बेस कैंडल, एक्स रेड एक्साइटिंग कैंडल, बेस बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, या इसको भी एक्साइटिंग मान सकते हो आप। एक्साइटिंग, बेस बेस बेस, और रेड, यहाँ पर एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन में आई, और प्राइस वापस से नीचे की तरफ गई। प्राइस अगर सप्लाई जोन में आएगी, तो नीचे जाएगी। प्राइस अगर डिमांड जोन में आएगी, तो वो ऊपर जाएगी। तो अगर आपको ये पता है आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ है, तो आप इसके अंदर यहाँ पे ट्रेड लेकर और यहाँ पे एग्जिट हो जाते, तो आप कितना प्रॉफिट बनाते? लेट्स कंसीडर फॉर एन एग्जांपल, ये प्राइस अभी 1559 पर थी जब ये इस डिमांड जोन में आई, और ये जब इस सप्लाई जोन में गई, तो ये थी 1788। 200 रुपए का मूव विद इन 1 मंथ इस स्टॉक ने, आफ्टर कमिंग इन दिस डिमांड जोन, आपको दे दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट पर शेयर 200 रुपीज, प्राइस हैज मूव्ड अप, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ नोइंग द जोन्स, योर जोन, कि मुझे ट्रेड करना कहाँ पर है, मुझे कहाँ तक वेट करना है, प्राइस कहाँ से ज्यादा चलने के चांसेस हैं, प्राइस कहाँ पे रुकेगी, और कहाँ से नीचे आएगी। अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं, तो आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत इजी एंड स्मूथ और रिस्क फ्री, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री आप बना सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग, कि अगर आपको कोई एक ट्रिक एंड ट्रेड बता दे, जिससे आप आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रख सको, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सको, आप ये समझ सको कि आपको
क्या करना है क्या नहीं करना है, तो wouldn't it be more beneficial for you and more स्ट्राइकफुल फॉर यू कि हाँ मैं इससे और इसके बीच में मैं नेविगेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यही मैं आपको इस सेशन में सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड विद इन द जोन्स and how we can become beneficial, profitable and pro traders. और यही चीज अपन को आज इस सेशन के अंदर सीखने को मिली है, राइट? सो आई टेक अ पॉज हियर और मैं आप लोगों से अब थोड़ा समझना चाहूंगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या क्वेश्चंस हैं। Hi, Tarun. So it was a very different perspective which you have given, like how emotional, how brain works. So it is quite insightful because I haven't thought of like this what you have just taught us. So I think this candle chart and this learning, I need to go through this again. And yeah, राइट, yeah. थैंक यू खुशबू। I know it's late in India, and thank you for you sticking out and attending this session. And it was quite interesting also. I appreciate that. Ankit, Arunima, Nikhil, your thoughts? Yeah, Tarun, this was really informative because obviously, as I mentioned, I have a small portfolio and things like that. But the candle wala to first time इतना detail में समझ के it is quite. So now I mean at least we know how technically we can invest in market. तो ये technical details पता होंगी तो emotions won't come into play, and then obviously we will know. Obviously, there are more. I'm sure there is more to it. It's more to So it. we'll Yes, be. मैं वही बोलने वाला था कि I wouldn't recommend कि based on this session आप लोग start हो जाओ। I would never recommend that. There is more to it. There is more to learn in this. But इस सेशन में मैं यही कवर कर सकता था। I think because काफी लेट भी हो चुका है काफी लोगों के लिए इंडिया में भी। So that is why I am doing it a little early also. But the idea behind this is to give you guys a gist कि on the chart कुछ भी illogical नहीं है। Everything is for a logic, और वो लॉजिक को ही आप लोगों को यहाँ पे पकड़ना है। और बेसिकली लॉजिक इज कि हमको डिमांड एंड सप्लाई के साथ खेलना है। हमको डिमांड जोन्स ढूंढने हैं और हमको सप्लाई जोन्स ढूंढने हैं। दैट्स ऑल वी हैव टू डू ऑन द चार्ट, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू फिगर इट आउट बाय दिस सेशन कि आप लोगों को ये समझ में आए कि मैं वही बोल रहा था शुरू में भी, मैंने जब स्टार्ट किया था सेशन की आई विल try to prove everything whatever I am saying psychologically on the chart, right? कि आप लोगों को न्यूज से कैसे नहीं घबराना है, आप लोगों को न्यूज से कैसे दूर रहना है, आप लोगों को आपकी साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है। That is what I was trying to tell you here. That is what this session was all about, to make you guys understand कि जैसे खुशबू ने स्टार्टिंग में बोला था कि आई वांट टू मेक अ सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम ऑफ फ्रॉम दिस मार्केट, विच इज बहुत 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 पॉसिबिलिटी है उसकी इससे, अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाती हैं तो। अरुणिमा, योर थॉट्स?
Yeah, it is the same. It's very insightful. पहली बार मैं ये चीज समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, to be honest. Uh, Hmm. काफी सारे YouTube channels देखे थे, tried to understand them, but नहीं, इतना डिटेल तो कुछ कभी भी समझ में नहीं आया. तो thank you for this. Um, अगर आपको मौका मिले, अगर आप इसका ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हो, वुड बी ग्रेट. क्योंकि ये Absolutely. काफी डिटेल था ना, तो इतना सा कुछ एक बारी में कंज्यूम करना मुश्किल होता है. आई एम I श्योर get it. Yes. एवरीवन वांट्स टू रेफर टू देम अगेन इन द फ्यूचर. तो Absolutely. Absolutely. Yes. थैंक यू. So with that, I think I will let you guys go. And thanks again. I know थोड़ा सा लंबा हो गया session, but uh, I thought it was important for us to talk about this so that we can make our mindset the way we want to make it. Just one thing I wanted to ask. Yes. What's the next step? Like, are you going to have another session, or like what happens next? Right. So the plan is to have these sessions once in a while. These are the free sessions that we call it, right? I mean, these are open to all. Next time, whenever I am putting up, just make the most of it. Come on, join in. We will talk more about the psychology, about the trading, about the techniques, right? And then there are the batches, right, which I am planning to run. So if I get interested participants, then I can do this in the batches. So the actual, that's what I was telling you, right? There's more to it. In that we can go in like the details, right? And that is not a 1 day session or 2 day session. That's like a 15-day batch, right? We will go through different topics in those 15-day batches. And once you are done with those 15 days, I guarantee you that you will be a new person in the terms of how you have seen so far and what you are going to see next. It's different. It's very good. It's very different, right? So if I see participants wants to join for those 15-day sessions, then reach out to me, let me know. We will schedule those 15-day sessions. We will do the batches. But if not, I will keep on giving this free sessions once in a while. We have done it for July. We will do it for August also. Maybe 2 times in July and one August. The frequency we can decide based on the interested parties. I know it's weekday. We can do it over the weekend also a little earlier, so that everybody can join in. But yeah, that's the plan. So these free sessions are equally good, but obviously you will not know the techniques of it, the fully techniques of it. But I'm pretty sure you will gain the good perspective about looking at the things in the market. And then nobody can fool you with those things, right? That, okay, ये अच्छा चल रहा है इसमें डाल दे. You will never put your money again the same way you have been doing so far. That is my guarantee. Even if you are attending these free sessions, you will not do that. बहुत हार्ड अर्न मनी होता है, किसी के बोलने के बेसिस पे अपन कभी नहीं डालना चाहिए, राइट? तो दैट्स द प्लान, अरुणा. Thank you. You're very welcome. All right, guys. Thanks again, everyone, joining this call, and we'll see if we can arrange one more session in July itself or in August. But if you guys are free, if you guys want to do something, let me know. Reach out to me. You guys have my number anyway. Uh, Thank you. Good night, and we'll meet again. Thank you. Bye. Good Good night. night. Tarun, Thank thank you. Bye, Good everyone. night. you. Bye Bye. bye. Bye bye.